So, greetings everyone. I hope everyone can hear me. Greetings to the teachers, students, and parents, and anyone else who is hearing the session. जो भी parents, teachers, students या जो भी interested लोग हैं वो session सुन रहे हैं उनके लिए greetings. Good evening. So remember, this session is brought to you exclusively by आस विद्यालय. सिर्फ आस विद्यालय पे ये session आपको available होगा. आस विद्यालय is anytime anywhere school जैसा कि आपको पता है. तो आस विद्यालय भारत का पहला स्कूल है जिसमें आपको घर बैठे क्लास 6 से क्लास 10 सीबीएसई के सारे सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशली संस्कृत. संस्कृत को स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इंडिया में आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया है जो संस्कृत को एक्सक्लूसिवली और अदर संस्कृत को प्रॉपरली जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाए. और ये नहीं, सिर्फ सिलेबस ही नहीं, साथ में अनलिमिटेड क्लासेस है. टीचर से हेल्प ले सकते हो. आपके लिए क्विजेस है, टेस्ट्स है. तो आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए प्लीज. एंड स्क्रीन पे आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, वो क्यूआर कोड फॉलो करिए. ये क्यूआर कोड और एक बार दिखाया जाएगा. तो इसी के साथ आई जस्ट गिव यू 5 seconds. इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन का. आप पॉज कर सकते हैं एंड क्यूआर कोड से. तो हम शुरू कर सकते हैं. आई थिंक वी कैन स्टार्ट द सेशन नाउ. I'll just introduce shortly about myself. My name is Tushar. I am a very I am quite enthusiastic about words. I have been for quite a long time. I have read a lot of books. मुझे books read करना पसंद है, articles read करना पसंद है, and especially जब read करता हूँ तो I focus a lot on words. Also, whenever I listen to songs, जब भी मैं गाने सुनता हूँ, so I focus a lot on the lyrics और उसका meaning. So that gives me a good kick. So why I'm telling you this because this has been my passion and I just wanted to share. मुझे आपके साथ share करना था कि क्या-क्या चीजें मुझे पसंद हैं in terms of. तो आज का टॉपिक है etymology. So पहले तो let's understand what is etymology, right? Etymology is nothing but word origin. How did a word come about origin? आपने कभी सोचा है कि we speak so many words in the day. कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, आप मराठी बोल रहे हो, उड़िया बोल रहे हो, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश बोल रहे हो, फ्रेंच बोल रहे हो, तो हर लैंग्वेज में हर एक वर्ड का कोई ना कोई ओरिजिन होता है. कहीं ना कहीं किसी ने वो वर्ड तो पहली बार उच्चारण किया होगा. तो वो वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो वर्ड का बर्थ जन्म कहाँ से हुआ. तो दैट इज व्हाट इज द साइंस ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड etymology. Now the question is हम etymology क्यों पढ़ें. आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ना, वर्ड्स है तो क्या होगा, there are words, so why is there a need to study the meaning of the words or the origin of the words. पहला important चीज है कि it works as a mnemonic. mnemonic का मतलब है कि mnemonic is nothing but an aid. Mnemonic is a helping technique which helps you to remember the word. For example, there is a word called pugnacious. उसका निमोनिक मैंने ऐसा किया था कि a pug that is vicious. pug मतलब एक छोटा डॉग होता है. a pug that is vicious, a bad pug. तो pugnacious का मतलब है कि नेगेटिव कॉनोटेशन, समथिंग बैड, राइट. जैसे ही आपने बहुत सारे वर्ड्स का निमोनिक किया होगा. फॉर एग्जांपल कोई राइमिंग वर्ड है किसी वर्ड से, तो निमोनिक का मतलब होता है कि वर्ड याद करने के लिए, टू रिमेंबर अ वर्ड, व्हाट टेक्निक्स यू यूज फॉर हेल्पिंग द. देन देयर इज एक्टिव वर्सेस पैसिव वोकैबुलरी. आपकी लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो एक्टिव वोकैबुलरी में होते हैं, हम डेली यूज करते हैं. जैसे डेली नाम का वर्ड है, राइट. तो कोई किसी ने स्कूल पे नहीं पढ़ा होगा तो उसे भी अगर राइट टर्न लेना होगा तो वो टर्न बोलेगा, मोड नहीं बोलेगा. वो ही विल से टर्न. टेबल, पेंट का कोई इंग्लिश हिंदी में वर्ड कोई बोलता नहीं है, राइट. यूजुअली ट्रेन को कोई लोहा पथरा में नहीं बोलता है. तो दीज आर एक्टिव वर्ड्स, राइट. एक्टिव वर्ड्स आपके लाइफ में होते हैं डे टू डे कम्युनिकेशन. पैसिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपने सुने हैं, कहीं आपने पढ़ा है, but then day to day it usage में आते नहीं हैं. That's why you tend to forget those words. For example, a very recent entry from passive to active is the word quarantine. तो quarantine word तो पता था, काफी लोगों को पता होगा. A lot of people must have studied the word quarantine before, but then because after March
सबको, पूरे इंडिया को या फिर सभी को पता चल गया कि क्वारंटाइन का मतलब क्या है. सो दैट वर्ड हैज ट्रैवल फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव. सिमिलरली इटाइमोलॉजी पढ़ने से आपके जो पैसिव वर्ड्स है, लॉट ऑफ पैसिव वर्ड्स, दे विल परमानेंटली बिकम एक्टिव बिकॉज यू विल नो अ स्टोरी, कि आपको पता चलेगा कैसे. अनदर एडवांटेज इज आप डिराइव कर सकते हैं. सो अगर आपको पता है सफिक्स और प्रीफिक्स पता है आपको, फॉर एग्जांपल, तो प्रीफिक्स मतलब पहले जो आता है, सफिक्स बाद में जो आता है वर्ड के, तो यू कैन डिराइव अ लॉट ऑफ वर्ड. जैसे फिल आपको पता है, सपोज फिल, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है, देयर आर सम प्रीफिक्सेस आई हैव रिटन. फिल इज देयर, एस्टर इज देयर, जियो इज देयर, एम्बुलेट इज देयर. ये सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पता है, तो आप इनसे कई सारे वर्ड्स डिराइव कर सकते हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, और ये दीज आर नॉट नेसेसरली प्रीफिक्स और सफिक्स, ये बीच में भी आ सकते हैं. तो फिल, जैसे फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का मतलब होगा, फिल का मतलब है लव, प्यार. फिल फिलोसॉफी, सो फिल फिलोसॉफी फिल से आया है, विच मीन्स लव फॉर नॉलेज. देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड बिब्लियोफाइल. So bibliophile is nothing but your a person who loves books, loves not necessarily reading but loves books. So biblio is books and file is love, right? अगर आप साइक वर्ड ले, साइक का मतलब होता है माइंड. तो साइक से काफी वर्ड्स आते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्री हो गया, राइट. तो whatever साइक के वर्ड्स आएंगे वो आपको पता चलेगा कि these are something related to the mind. एस्टर, एस्टर का एग्जांपल लेंगे हम. एस्टर का मतलब होता है, एस्टर इज बेसिकली ए स्टार. तो जो भी स्टार से रिलेटेड चीजें हैं वो एस्टर से स्टार्ट होगी या फिर एस्टर उसके अंदर होगा. फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, राइट. एस्टरिस्क, जैसे आपके कीबोर्ड पे एक स्टार साइन होता है, उसे एस्टरिस्क कहते हैं, वो स्टार की तरह दिखता है. तो एस्टर इज दैट टाइप ऑफ वर्ड. जियो तो आपको पता है, जियो इज नथिंग बट अर्थ, राइट, टेरिटरी, टेरेन. Geography. Geography is study of the area of Earth, right? Geology is again study of Earth. Geometry is measuring Earth or measuring anything. Ambulate is something related to walking. So छोटे बच्चों का वो होता है चलने के लिए जो चीज होती है, उसे पर एम्बुलेटरी कहते हैं. देन अगर आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह ले जाती है जो एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस भी एम्बुलेट से है. एम्बुलेट मतलब पुराने जमाने में जब वॉर होता था तो लोग पैर पे चल के स्ट्रेचर लेके चलते थे. एंड वो पैर पे चल के, अपने पैरों पे चल के स्ट्रेचर में पेशेंट को रखते थे. दे यूज्ड टू एम्बुलेट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एम्बुलेंस. नाउ इंजन आ गया, आइस इंजन आ गया, गाड़ी आ गई, तो एम्बुलेंस का नाम टिक हो गया, राइट. प्री एम्बल इज देयर, कॉन्स्टिट्यूशन में प्री एम्बल होता है. प्री एम्बल, पहले चलना. तो बिफोर यू रीड, टेक अ वॉक, you know, before you read, take a walk with this document before preamble. तो देखा आपने, जैसे etymology पता होने से a lot of things become easy. So you can derive a lot of words. मैंने तो बहुत ही कम examples दिए. Similarly there will be a lot of words. So आगे हम पढ़ेंगे कुछ words. जैसे story association है, तो कुछ stories पढ़ेंगे तो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे. I assure you कि if you know listen to these stories, you can share these stories with your friends. You will talk about it more. धीरे धीरे आपके active vocabulary में आएगा. You will never be able to forget all these stories. So yes, let's move on. All right. So the first word for the day is sandwich, right? Sandwich word कहाँ से आया? So you know I was quite curious बचपन से कि words आते कहाँ से? Sandwich, I used to think कि कुछ ना कुछ sand से related होगा, या फिर you know it must be related to some which का मतलब होता है कि जुड़े, right? So it must be related to that. But then the story is very interesting. So the story goes back to some 250 years, right? When John Montague, uh, fourth Earl of Sandwich is an area, was a region, and he was a compulsive gambler. Gambler का मतलब है जुआरी, right? So, काफी cards वगैरह खेलने में उनको काफी fun होता था. So what he did was, and since he was a compulsive gambler, he didn't. You must have heard or you must have seen कि gamblers कैसे होते हैं. Gamblers are just like gamers. वो अपना टेबल छोड़ना नहीं चाहते, you know, अपना apparatus, अपना system छोड़ना नहीं चाहते. They can sit at their system for hours and hours without. So he hated leaving his table. Who? John Montague. And तो उनका जब food वगैरह भी होता था, so that food used to be bought in.
So when he had meat, so when he wanted meat, so to get his fingers from getting dirty or greasy, that meat greasy होता है, dirty होता है, oily हो सकता है, and then उससे आपके cards को problem हो सकता है. So what he used to do is he used to take 2 bread slices and उसमें वो meat रखता था. And this was not the custom at that time. उनका कस्टम नहीं था, उस टाइम का कस्टम और था, डायरेक्टली ब्रेड अलग से खाना, सूप के साथ ब्रेड खाना. So then Montague के friends, they started asking him, so I want the same thing. So how would you say? Since he was the 4th Earl of Sandwich, they would say we want the same as sandwich, and that's how the word caught on. That's how the word sandwich came to be. So they're still using the word, right? So this is the this is a funny story about words. Very few people know that how the words came about, but once they know how the words came about, they will share the stories, and then the word will stick to them. You never know. I mean, English. I'll just take a minute to talk about the language before moving on to the next word. English language, जो है, English is a very, say the word. English is a very bastardized language. Okay, गाली नहीं दे रहा हूँ. Bastardized का मतलब होता है कि it is borrowed from a lot of other languages and it is contaminated in the sense positive contamination भी हो सकता है. So it is mixed and matched with a lot of languages. कुछ words Latin से लिए है, कुछ words recently कुछ words हिंदी से लिए है, जैसे पंडित हो गया. आप यूएस में सुनेंगे लोगों को पंडित यूज करेंगे, बाजार यूज करेंगे, right? So English is a very I would say it's a very mixed and matched language. So हर एक language का origin कहीं से भी हो सकता है. So that's how English came to be. All right. So the next word that we are going to see is nightmare. So I've just put in funny image here. Nightmare. Everybody knows what nightmare is, right? So this is not. Remember, this is not a vocabulary session. हम word का meaning जानने की कोशिश कर रहेंगे, obviously, but assuming कि these are simple words, we'll try to know the story. So nightmare का अगर आपको पता है background, so it's great. Otherwise, we'll just see. So nightmare में if you read the word, you can see कि night का मतलब होगा रात, and there is something to do with the word mare. Mare का मतलब क्या है? What is mare? Because mare का मतलब must be something bad, right? It can't be a good night. It has to be something bad. That much you can guess, I guess. Let's see. So, like I said, nightmare is derived from 2 words, night and mare. And in the title itself, I have written nightmare is nothing but a night monster. So it comes from a Germanic folklore. So Abhi, whenever you must be like, there must be kids joining here, and whenever the adults, you guys must be kids. हमें भी बचपन में ऐसी कुछ कहानियां पढ़ाई जाती थी, सुनाई जाती थी कि रात में एक्सेट्रा XYZ वो आएगा, घोस्ट आएगा, एंड देन ही विल हॉन्ट अस अगर आपने खाना नहीं खाया तो एक्सेट्रा. तो वैसे ही एक फोकलोर है, जर्मैनिक फोकलोर है, पुरानी फोकलोर है. फोकलोर इज नथिंग बट लोर का मतलब होता है स्टोरी, फोक का मतलब होता है द लोकल कल्चर. स्टोरी विच गोज इन द लोकल कल्चर says that mare is an evil female spirit. Okay, female spirit है, spirit का मतलब होता है something like a ghost, आत्मा. तो एक evil female spirit है, incubus है और a goblin. So incubus is nothing but an evil spirit which sucks the spirit or sucks the life out of you. रात को आपके चेस्ट के ऊपर बैठे. Goblin is similar. Goblin is a European word, right? So वो आपके चेस्ट के ऊपर बैठेगा and then you will suffocate. So that monster is called a mare. So जर्मनिक फोकलोर में एक स्टोरी भी थी कि मैर जो है वो रात को आपको लेके जाएगा इसके ऊपर, like he will take you on a walk, or the mare she will take you on a walk, or she will take you on a horse ride, etc. So she will cause you a lot of exhaustion. Exhaustion का मतलब है आपको थका देगा. इसीलिए नाइटमेयर वर्ड आया. तो नाइटमेयर जब भी आता है आपको बुरा सपना आता है तो आप कभी भी कामली नहीं उठते. आप उठते हो तो ऐसा लगता है कि आप बहुत सारा कार्डियो करके आए हो, आपने रनिंग की, जॉगिंग की बहुत सारी, आपका हार्ट पेस बीट करता है, राइट? द स्टोरी रिलेट्स. द स्टोरी सेज दैट द मैर हैज बीन टेकिंग यू ऑन अ राइड. So that's how the word nightmare came, right? All right. So at the end of this
we have written something like a gremlin causing trouble. So gremlin, so there are different type of ghosts, right? जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला चुड़ैल etc. और हर एक गोस्ट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो भी हम, तो वैसे ही ये सारे गोस्ट का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है. These are called nuances. If you want, you can note this word nuances. तो गोस्ट को आप स्पिरिट बोल सकते हो, इंक्यूबस बोल सकते हो, गॉब्लिन बोल सकते हो, ग्रेमलिन बोल सकते हो. तो जैसे ग्रेमलिन एक वर्ड है, ग्रेमलिन इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर a ghost which causes trouble in your machinery. तो एक मशीन का गोस्ट मान लो, राइट? तो फैक्ट्री में कभी कभी अचानक से कुछ बंद हो जाता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त, लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्यों ये मशीन बंद हो रही है. ऑयलिंग तो किया है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, व्हाई इज दिस मशीन कॉजिंग प्रॉब्लम? तो कहा जाता था कि ग्रेमलिन आके, ग्रेमलिन नाम का गोस्ट आया है और ग्रेमलिन ने आके उस मशीन में कुछ he has caused some trouble in the machine. That's what I just wanted to tell you. All right, so nightmare is done, sandwich is done. Now Bluetooth. So I think this generation would be धीरे धीरे, you know, आप Bluetooth के बारे में कम सुनेंगे. So when we were growing up, we used Bluetooth a lot to transfer data. Even now you use Bluetooth for, you know, connections have wireless connections. So Bluetooth नाम आया कैसे, right? तो देखने से तो ऐसा लगता है कि ब्लूटूथ इन द सेंस टूथ दांत होता है एंड ब्लू नीला रंग है, so क्या नीला दांत ऐसा कुछ रिलेशन होगा? व्हाट इज देयर अ रिलेशन विद द टूथ? लेट्स हैव अ लुक. So no, it's not exactly a relation with the two. The relation is, or the origin, the etymology is from the name of a Denmark's or Danish king. Danish is the adjective of Denmark. So उनका नाम था फ्रांस जी पेंस्टन हेराल्ड ब्लूटूथ. दिस वाज द नेम. सो यूरोपियन किंग्स के नाम आप पढ़ेंगे तो बहुत ऑब्वियसली लंबे लंबे नाम. इसके ऊपर एक स्टोरी भी बताऊंगा मैं. Was known to unite many warring Danish tribes. So you might know that, you know, in earlier days, even in India, there were so many tribes, so many small regions. So Sardar Vallabhbhai Patel ने सारे regions को, सारे fighting tribes और fighting, you know, kings को साथ में लेके आए. वैसे ही, just like Sardar Vallabhbhai Patel of those days, जो Danish king थे, Herald Bluetooth, उन्होंने Danish tribes को साथ में लेके आए, and they you know, they united against a common enemy. Common enemy का नाम था नॉर्वे, जो आज भी है. तो जो कंट्री आज भी है, तो नॉर्वे के अगेंस्ट उन्होंने यूनाइट किया. सो ब्लूटूथ इज समथिंग, हेराल्ड ब्लूटूथ ने ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर पा रहा था, यूनाइट किया ब्लूटूथ, राइट? तो इसीलिए ब्लूटूथ जो है वो नेटवर्क्स, जो आज मतलब ब्लूटूथ नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क्स है, वायरलेस नेटवर्क्स के लिए हमने ब्लूटूथ वर्ड अडॉप्ट किया. जो इन्होंने भी ब्लूटूथ इन्वेंट किया है, इन्वेंटर्स ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हैव राइटफुली यूज्ड दिस नेम एंड गिवन क्रेडिट टू. तो जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे कि कुछ नाम, कुछ वर्ड्स नाम से आए हैं, कुछ वर्ड्स दो चीजों को मिक्स करके आया है, जैसे नाइटमेयर, ब्लूटूथ एंड सैंडविच भी नाम से आया था. lot of words are, you know, very are derived on the go. जैसे ब्लूटूथ ने सोचा नहीं होगा कि मेरे नाम का ब्लूटूथ बनेगा, राइट? सैंडविच ने सोचा नहीं होगा कि मैंने सैंडविच. ऐसे ही आजकल भी, मतलब अगर आपको पता है, इफ यू नो एनी वर्ड्स व्हिच आर वेरी रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड व्हिच आर वेरी रिसेंटली कॉइन्ड. वर्ड को डिस्कवर नहीं किया जाता, वर्ड को कॉइन किया जाता है. तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए, स्टोरी भी बताइए लोगों को, ताकि यू नो एवरीवन हु विजिट्स दिस वीडियो विल बी एबल टू सी. कोई भी वर्ड, जैसे मैं एक वर्ड बताता हूँ, काफी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है. देयर इज अ वर्ड और अ फ्रेज नोन एज वार्डरोब मालफंक्शन. वार्डरोब मालफंक्शन आप गूगल कर सकते हैं. वार्डरोब मालफंक्शन क्या होता है? इट इज नथिंग बट व्हेन अ सेलिब्रिटी हैज अ स्लिप ऑफ देयर क्लोथ्स में कुछ टेयर हो जाता है, कुछ, you know, एक्सीडेंट हो जाता है. एक्सीडेंट इन टर्म्स ऑफ फैशन, इट्स अ फैशन एक्सीडेंट. This was coined very recently, I think 15-20 years back. Justin Timberlake and Janet Jackson were performing. Janet Jackson is Michael Jackson की बहन, sister. So there was some tear in her dress, which then he coined this word. So there are a lot of words like daily coin हो गया. हमारे प्राइम मिनिस्टर, he's
coining a lot of words, he's coining a lot of phrases. You can see because वो easy होता है, like 5S, 4 Ps, something like that. So ये सारे वर्ड्स धीरे धीरे पैसिव से एक्टिव वोकैबुलरी में भी आ रहे हैं, राइट? तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कोई भी इंटरेस्टिंग वर्ड होगा जो रिसेंटली कॉइन हुआ है या आपने कॉइन किया है। हम भी कॉइन करते हैं वर्ड्स, हमारे फ्रेंड्स के बीच में कभी कभी एक कॉमन वो होता है, राइट? सीक्रेट लैंग्वेज होता है, सीक्रेट वर्ड होता है, इनसाइड जोक होता है, राइट? So whenever you are coining or whenever you are talking about a private word, basically you are trying to coin a word. अगर वो word caught on हो गया, so best. For example, meme is a very recently uh, used word. Meme जो है, I don't think 10 साल पहले meme word popular था. तो एक साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, उनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस. Richard Dawkins is also an author. He's a very renowned author. He has written a very beautiful book called The God Delusion. So Richard Dawkins ने meme नाम का ये word coin किया था, and this word got caught on, and then we सारे social media में everyone is using it, right? So like I said, so languages का origin जो है ऐसा नहीं है कि किसी वेद में लिखा है या फिर किसी XYZ person ने एक डिक्शनरी बनाई वही फॉलो कर रहा है. It's an evolving animal. So English language especially is an evolving organism. All right. So whoever जो start में join नहीं कर पाए थे, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि this video and this session is exclusively brought to you by आस विद्यालय. आपके स्क्रीन पे आस विद्यालय दिख रहा होगा. आस विद्यालय means anytime anywhere school. You can see a QR code. आपको QR code दिख रहा होगा स्क्रीन पे. प्लीज आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, स्कैन करिए, which will take you to the download page. You can use the app. So आस विद्यालय में आपको 6th to 10th के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे. All the subjects like math, science, social science, etc. All the subjects, and especially आपको संस्कृत सब्जेक्ट मिलेगा आस विद्यालय. So Sanskrit is a subject which very few people teach online, and we don't think that there is anyone else who is teaching it in as organized fashion as we are teaching, right? So parents, teachers, students जो भी ये session देख रहे हैं, kindly visit Ask Vidyalaya website and download the app. You have a look, and I'm sure that you will enjoy it. Yeah, let's move on. All right, so this is a very interesting logo, even though the logo is not correct. I mean, the logo is not exactly what it is, but you guys must have guessed it. So it is obviously McDonald's logo. Comment section में बताइए कि ये logo ऐसा क्यों है? Why this logo is split, right? So it was released by McDonald's. I have not split it like this because this is an official marketing campaign by McDonald's to promote something. तो आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, गैप है. डिस्टेंस गैप इज द हिंट. आप उससे गेस कर सकते हैं कि क्या बताना चाह रहा होगा. तो द वर्ड इज मैक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स. हम आज अभी जो स्टडी करेंगे वो वर्ड है मैक. मैक का मतलब क्या होता है? जैसे मैथ्यू मैककॉनहे आपने सुना होगा, अमेरिकन एक्टर, राइट? देन मैकडॉनल्ड्स इज देयर, राइट? मैक्यूलम, ब्रेंडन मैक्यूलम, जिन्होंने फर्स्ट आईपीएल में सेंचुरी लगाई थी. आईपीएल के फर्स्ट मैच में फर्स्ट आईपीएल में सेंचुरी लगाई थी. देन मैकमिलन. तो मैक वर्ड आपने कई बार सुना हो. लॉट ऑफ ब्रांड्स इन लॉट ऑफ नेम्स, नॉट इन इंडिया ऑफ कोर्स. तो दिस वर्ड, ये जो मैक है, इसका मतलब क्या है? तो मैक का मतलब होता है सन ऑफ. सन ऑफ, जहां भी मैक आया मतलब सन ऑफ, राइट? तो जैसे मैक एक्स लिख दिया मैंने, राइट? मैक एक्स मतलब सन ऑफ एक्स. तो मैकडॉनल्ड्स का मतलब क्या होगा नेचुरली? सन ऑफ डोनाल्ड, राइट? तो आप जैसे मैथ्यू मैककॉनहे है, मैकमिलन है, सन ऑफ मिलन, राइट? एक्स का मतलब है, आई मीन मैक का मतलब है सन. कमेंट में आप मैक से जितने भी नाम आपको याद आ रहे हैं, आपको जो भी नाम या whatever brands you are remembering, just so the naming style comes from European countries. So you must be wondering कि यार English के सारे words यूरोप से ही आ रहे हैं. It's very natural if you know a little bit of history.
how Europe colonized everyone, how the language spread to Commonwealth countries. कॉमनवेल्थ का मतलब है कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश किंग ने, ब्रिटिश क्वीन ने या किंग ने, जिन्होंने भी वहाँ पर राज किया, देयर टेरिटरी है। कॉमनवेल्थ में फॉर एग्जांपल जैसे आता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो कम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, आपने सुना होगा कुछ साल पहले दिल्ली में कुछ कॉमनवेल्थ स्कैम भी हुआ था। तो ब्रिटिश या फिर यूरोप से ही काफी सारे वर्ड्स आए। So, ये मैक स्टाइल जो है इट्स अ यूरोपियन स्टाइल एंड इट स्पेशली कम्स फ्रॉम स्कॉटलैंड, राइट? स्कॉटलैंड और आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूके, नियर यूके, राइट? तो यू कैन रीड दिस, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि मैकडोनल्ड्स का मतलब है कि सन ऑफ डॉन। एंड ये बहुत सारी चीजें इसलिए कॉट ऑन होती है बिकॉज दे आर सिंपल। सो इज नॉट एग्जैक्टली मैक, इट इज मैक, एमएसी, मैक। मैक का शॉर्ट फॉर्म है मैक। जैसे आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, जब बहुत बड़ा नाम होता है तो वो लोग बीच में वो लगा देते हैं, राइट? पूरा एन अपोस्ट्रोफी, तेंदुलकर का टी एन डी एल कर। So Mac caught on because it was simple and it is very, you don't have to say a lot of syllables, say. It's a very simple word, right? Next word is robot. Robot is such a small word. So robot is a two-syllable word. It's such a small word. So like Mac, पीछे देखेंगे, Mac का Mac हो गया था, वैसे ही आजकल it's a very new word. It's not an old word. Bot, बॉट नाम का वर्ड अभी हम सुनते हैं, वो चैट बॉट, जो भी बॉट है, राइट? तो बॉट इज अ न्यू वर्ड एंड रोबोट को हमने और शॉर्ट कर दिया बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, इट्स इजी टू। तो रोबोट का ओरिजिन देखेंगे। रोबोट का ओरिजिन है, रोबोट को अगर आपको याद रखना है तो रोबोट इज नथिंग बट फोर्स्ड लेबर, राइट? समथिंग लाइक अ स्लेव, राइट? तो इट्स एन ओल्ड चेक वर्ड। चेक का मतलब, इसको चेक प्रोनाउंस करेंगे CZECH, चेक। So check word है robotnik, right? Robotnik, which is, like I said, similar to slavery. It is nothing but forced labor. Uh, another word is robota. Robota is also forced labor, right? Or rather a punishment or a compulsory service, right? Robot eating, to work or to drudge, that is to work hard, right? So the word was very recently popularized. I would say recently in the sense just 100 years back. 2020 चल रहा है, 1920 में वर्ड पॉपुलराइज हुआ था। देयर वाज अ प्ले नेम्ड एज RUR, रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट नाम का एक प्ले था, राइट? एंड जो प्ले के फॉर्मर्स थे, प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने प्ले क्रिएट किया था, उन्होंने वर्ड ये कर दिया, पॉपुलर कर दिया। एंड इवन दे डिड नॉट नो हाउ दिस वर्ड केम अबाउट। अनदर वर्ड फॉर a formal word for robot is something known as automaton. Automaton कहते हैं उसे। So if you want you can note it down. It's a more, it's an old word. It's a more formal word, older word. Right. So this is my favorite word, disaster. Now you must have gotten a hint or a sense कि disaster का मतलब क्या है। I mean मतलब तो सबको पता है, story क्या है। मतलब तो है कि disaster means everything is gone bad, right? सब कुछ तहस नहस हो गया, बहुत बुरा हो गया, डिजास्टर हो गया। जैसे अर्थक्वेक आता है या फिर एनी नेचुरल कैलामिटीज, अ डिजास्टर। आर्टिफिशियल डिजास्टर्स आर आल्सो देयर, जैसे रिसेंटली फुकुशिमा में न्यूक्लियर रिएक्टर में देयर वाज एन इशू, सो वोल्केनिक इरप्शंस आर एनीथिंग। सो इस सेशन के शुरुआत में अगर आपने, लाइक यू मस्ट हैव सीन द सेशन फ्रॉम द स्टार्ट, तो आपको पता होगा कि आई हैड स्पोकन अबाउट वर्ड कॉल्ड एस्टर, राइट? तो एस्टर का मतलब मैंने बताया था कि इज अ फ्लावर। एस्टर एक फ्लावर होता है, छोटा फ्लावर होता है काफी, एंड इट लुक्स लाइक दिस। ऐसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इट लुक्स लाइक अ स्टार। जैसे छोटे बच्चे स्टार बनाते हैं अपने ड्राइंग्स में। स्टार कैसे बनाते हैं हम? यू ऑलवेज ट्विंकल, राइट? ट्विंकल द स्टार्स। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो छोटे 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 स्टार्स है।
and they are made in a twinkling fashion. So they are made like an aster flower, right? Although star is just तो टॉपिक से हटके स्टार ऐसा नहीं होता. स्टार इज अ बॉल ऑफ फायर. सूरज की तरह स्टार होता है. स्टार ऐसा नहीं होता. लाइक स्टार में ऐसे स्पाइक्स नहीं होते. स्पाइक्स इसलिए दिखते हैं हमें because students of 9th and 10th and above will understand there is something called as refractive index. तो स्टार जितने भी दूर हो, जितने भी लाइट ईयर दूर हो, वहां से अर्थ के बीच में कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर होता है, बीच बीच में, सब जगह नहीं. मोस्टली इट इज वैक्यूम, बट देन देयर इज समटाइम्स देयर इज सम एटमॉस्फेयर, सम गैसेस आर देयर, सम प्लाज्मा इज देयर. उसकी वजह से स्टार ऐसे दिखता है हमें, स्टार्स टिमटिमाता हुआ. जैसे आप गरम कढ़ाई के ऊपर से आप देखोगे दूर की चीज, तो आपको वो भी टिमटिमाती दिखेगी. सिमिलर. एनीवे, सो लेट्स कम बैक टू डिजास्टर. एस्टर मैंने बताया एक स्टार जैसा लाइक अ शेप्ड फ्लावर होता है, स्टार शेप्ड फ्लावर. दिवाली में हम स्टार लगाते हैं वैसा. डिस का मतलब सबको पता है. डिस डिस इज अ प्रीफिक्स. डिस का मतलब होता है या फिर मिस, राइट? मिस या डिस जहां भी आए तो आपको समझ लेना चाहिए एज अ प्रीफिक्स. जहां भी आए तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट द वर्ड हैज नेगेटिव कोनोटेशन. कोनोटेशन का मतलब है कि वो वर्ड नेगेटिव सेंस है उस वर्ड. Disaster, misnomer, right? Misanthropy, misogynist, मिस या डिस जहां भी आए नेगेटिव. तो डिसास्टर, तो अभी जैसे देखा आपने, डिस का मतलब है बैड, राइट? बैड या समथिंग नेगेटिव. एस्टर इज स्टार, बैड स्टार और नेगेटिव स्टार. क्या है इसका मतलब? लेट्स सी. तो लाइक आई सेड, डिजास्टर इज बैड स्टार. तो पुराने जमाने में, इनफैक्ट अभी भी, नॉट जस्ट इन ओल्डन टाइम्स, इवन नाउ, आपको पंडित जी या फिर इफ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फर्क है. यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी या फिर आप वो टीवी पे भी देखते होंगे, वो कहते हैं कि आपके तारे खराब है, यू हैव बैड स्टार्स, राइट? So in olden days, people used to believe, like I've written, people used to believe that the position of stars really influences your day-to-day life. आपका day-to-day life जो है वो position of stars से काफी influence होता है, right? और आपके ऊपर misfortune, अगर आपके तारे अच्छे हैं, if you have good stars, then you will have a good fortune. If you have bad stars, then you will have a misfortune, unfortunately. तो यहाँ से ये word आया. It is called disaster, right? Disaster is bad stuff. It's a good story to talk about. अगर आपको किसी को बताना होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, एस्टर से कुछ और भी वर्ड्स डिराइव हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं कुछ हिंट देता हूँ. जैसे अभी मैंने 2 वर्ड्स बताए, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, राइट? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी. You have another word astronaut, right? तो एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है, नॉट इज नॉट मतलब सी, NAUT, नॉटिकल माइल्स कहते हैं ना, एस्ट्रोनॉट. सो सेलर ऑफ द स्टार्स. एस्ट्रोनॉट मतलब जो समुंदर का सेलर है. सेलर के लिए इंग्लिश हिंदी वर्ड क्या होगा, आई डोंट नो. समुंदर का ट्रैवलर मान लो, समुंदर का सेलर, दैट इज एस्ट्रोनॉट. तो आप और बताइए कमेंट सेक्शन में, एस्टर से और क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं. राइट, हस्बैंड. तो हस्बैंड का मतलब है कि जैसे आजकल के कॉनोटेशन में या फिर रीसेंट कॉनोटेशन में हमें ऐसा लगता है कि हस्बैंड इज अ समवन हु, ऐसा वर्ड होगा, कुछ पावरफुल वर्ड होगा, राइट? इट मस्ट बी अ वेरी पावरफुल वर्ड. समवन कंट्रोल्स द हाउस, ओनर ऑफ द हाउस, राइट? क्योंकि वी थिंक, राइट, आजकल तो ऐसा नहीं सोचते, देन हम ऐसा सोचते हैं, पुराने जमाने में ऐसा ही सोचते हैं, समवन ओनिंग द हाउस, क्योंकि इट वाज अ मैन्स वर्ल्ड पास्ट, राइट? So it must be something like that. Let's see what's the meaning. So quite the contrary, but similar to what I was saying. Husband comes from house bound, house plus bound. Right? So it is not exactly someone who is bounded to the house. That's not the literal meaning. But it comes from Old Norse. Norse is your Scandinavian area. जो पहले बताया था, Norway. तो ओल्ड नॉर्स एक वर्ड है, उसका नाम है, द वर्ड इज कॉल्ड हस्बैंडी. HUSBOND है, हस्बैंडी. इज मास्टर ऑफ द हाउस एंड लिटरली हाउस ड्वेलर.
So what happened is, हम लोग like humans 10,000 years back, we were hunter gatherers, and then we settled down. We decided to settle down in a place because of finding out कि हम agriculture कर सकते हैं, etc. जो भी हम animal farming, animal rearing कर सकते हैं एक जगह पर. So what happened was, someone who could own a piece of land, or build a house on it, became more prestige. Someone, obviously, if someone has a land, someone has agriculture, that person will be taking care of that land and agriculture and animals all along his life, right? So he would be bound to the house, responsible. That's how master of the house or house dweller word has come from. That's how the word house bound or husband has come, right? And remember, it's derived from house and bond. That word's origin is Old Norse. All right, so this is again one of my favorite words, sincera, correct? So sincera, you can see meaning is without wax, right? And you can see some broken, objects, some broken ceramics on the screen, and you must be thinking that when I've written sin and sera separately, there must be some relation in breaking of items. And the title says without wax. Now let's understand what this word means. Sin sera is sin. जहाँ भी sin आता है, whenever you hear the word sin, that means without. So sin translates to without, and sera translates to wax. Right? So sin sera means without wax. So what is the story now? Listen to this carefully. Story is very interesting. So in ancient times, what happened was cement. See, whenever you used to break things, or whenever you used to fix up things, so you required cement, right? Cement was very expensive. Cement was quite expensive. So what happened was unscrupulous मतलब without morals, immoral, मतलब जो जाली लोग हैं, right? नकली लोग हैं. So bad people or unscrupulous people, immoral people would use to cover the brick layers or cover the cracks with wax. Wax सस्ता था as compared to cement. वो पता भी नहीं चलेगा. तो wax में कलर करके वो लोग लगा दोगे. Wax भी चिपका देता था. But then जब भी गर्मी होती थी, गर्मी का सीजन होगा, तो क्या हो जाएगा? Wax मेल्ट हो जाएगा, right? Wax मेल्ट होगा तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, right? Your structure would collapse, house would collapse, the objects would crumble down, right? So anything that was sincera, that is without wax, was a guarantee of sincerity. Okay, was a guarantee of truthfulness, was a guarantee of something that is pure. Okay, wax was considered as a bad contaminant. So sincera का मतलब है without wax, and कोई भी चीज आप sincerely किसी को बता रहे हो तो आप without wax करके दे रहे हो. You are not unscrupulous, or you are being honest. Right? So before, there are two other words. There is ventriloquy, and the other word is sans serif. Right? I will come to these words, but before that, we'll take some more bonus words. Right? So there is a word. See, I was talking about some prefixes and suffixes, right? So if you talk about certain words जो आपके आसपास दिखते हैं और जो आप आसपास सुनते हैं, जैसे आपने सुना होगा lunar eclipse, right? Lunar eclipse. So मैं आपको कुछ I would not call it homework, but I'll just give you some connection. So lunar or luna is a word relating to the moon. Right? So when you say someone is lunatic, what does that mean? Right? So these are the words which we use in common language. Generally use करते हैं lunatic. Okay, he has become a lunatic मतलब someone has gone mad. So आपको ये words, like there are a lot of words now. After this session, I believe that you will start connecting these words.
मून हो गया, लूना हो गया. So then there is another form of word origin which says that आपको एक वर्ड किसी भी वर्ड से डिराइव करनी है. जैसे मैंने बताया आपको कुछ टाइम पहले, someone who has started late or joined us late, there are some words I mentioned like ambulatory, there are some words like fill, right? So similarly there are a lot of words like this. So आप कोई भी वर्ड से कोई भी वर्ड डिराइव कर सकते हो. जैसे अगर आप कॉम नाम का एक वर्ड ले, COM कॉम, CON कॉन, दैट मीन्स टुगेदर, राइट? सो कॉनवाइबल या फिर कम्युनिटी का वर्ड है, right? जहाँ भी कॉम या कॉन आएगा, so that means कि you are bringing something together. So before I discuss these two words which are on the screen, ventriloquy and sans serif, I was not going to discuss these words, but then I thought I'll just share this other. Uh, yeah. Before I come to those words, anyone who has joined right now or joined very recently can scan this barcode and can actually go and visit our website, and we also have an Instagram page. So I'll just talk a little about Ask Vidyalaya and then about how I acquired and how you can explore more about this. So like I had said, in short, Ask Vidyalaya is India's first online school. Ask Vidyalaya is anytime, anywhere school. You can study the website, you can study the Instagram page, you can download, downloading is free. It's a free app for downloading. You can check out, the content, and I'm sure that you'll be amazed. So it's काफी बड़ा भंडार है learning. So how I learned these words, how I came about this words. So there is a very beautiful book called as Word Power Made Easy. जब मैं IIT मेरा खत्म हो गया, उसके बाद I joined Indian Oil Corporation, सरकारी नौकरी. So I thought that I need to do something exciting. I thought that I will take CAT, which is a common aptitude test for going into IIMs. And someone told me about this book, and I fell in love with it. So मेरा एक blog भी है, Quora नाम का एक platform है, Quora.com. Quora पे मेरा एक blog है जिसका नाम है Interesting Etymologies. And there is this book which I learned, and this book gave me the inspiration. I don't know if you can see it on the screen. I'll just try to show it. So it looks like this. I think it's an inverted image. The book looks like this. You can note it down. आप note कर सकते हैं. बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी. बुक के ऑथर का नाम है नॉर्मन लेविस, राइट? देयर इज एन वेबसाइट नोन एज etymology.com. तो आप ये वेबसाइट पे जाके कोई भी वर्ड आप सर्च कर सकते हैं. एनी वर्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड. नॉट जस्ट द वर्ड्स व्हिच आई हैव मेंशन, एनी वर्ड, आप कोई भी वर्ड जाइए, ऑनलाइन जैसे है, राइट? एनीवेयर या फिर स्कूल है या एनी वर्ड. तो आपको जो भी वर्ड पसंद आता है उसका आप ये करिए, सर्च करिए इटाइमोलॉजी कैसे है, एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वर्ड आपका फेवरेट है, राइट? एंड व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग word that you found, right? So you can do that. There is another thing I wanted to share, that is nuances. Okay, so I could not cover that in the session, but since we have time, I will just talk about it for 5 minutes. So nuances पे आता हूँ मैं, but let's finish these two words. So the word is ventriloquy, right? तो ventriloquy का मतलब होता है कि आपने देखा होगा वो पपेट शो जिसमें ऐसा लगता है कि पपेट बात कर रहे हैं, राइट? आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, बट इफ यू हैवंट, यू कैन गूगल इट. काफी इंटरेस्टिंग शोज है यूट्यूब पे ventriloquy के, काफी फनी है. तो इट्स अ वेरी ओल्ड आर्ट. इट्स अ वेरी ओल्ड स्टेज परफॉर्मेंस आर्ट. आजकल बहुत ही कम हो गया है, आजकल स्टैंड अप कॉमेडी आ गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But then this was a very, very highly trained, and it's the job of a trained and a highly skilled person, right? So ventriloquy word कहाँ से आया, right? तो ventriloquy आया है, ventris का मतलब होता है belly, आपका belly, and loqui का मतलब होता है speak. जहाँ भी loqui word आया या loquacious, right? lock ये word आया, that means speaking की बात हो रही है, talking की बात. Ventri आया, that means belly की बात हो रही है.
So ventriloquist is speaking from the belly, right? So the toy is also known as a dummy, and the act is known as throwing one's voice. Another word I want to talk about is sans serif. Sans का मतलब होता है without, serif का मतलब होता है edges. So sans serif is a font. It's a font, and as far as I remember, this font was invented by Steve Jobs. So I don't remember the exact story, but you guys can look it up. So that's not part of this discussion. I think it is. You can let me know in the comment. अगर मैं गलत हूँ तो please comment में correct करें. Let's come to nuances. I want to talk about nuances. Nuances का मतलब होता है कि small informative differences in meanings of words or differences in words. So nuances words के point of view से बताता हूँ. जैसे आपने सुना होगा कि he has hit a massive sixer. क्रिकेट अगर आप फॉलो करते होंगे तो he has hit a massive sixer. Okay. Or oh, that's an enormous achievement. Right? Or it's a thing of a huge pride, right? Or it's a giant building, correct? तो अगर आप नोटिस करोगे तो थिसॉरस नाम की चीज है, थिसॉरस या फिर सिनोनिम्स ले लो. थिसॉरस इज नथिंग बट अ डिक्शनरी फॉर सिनोनिम्स, ऐसे आप बोल सकते. So if you look at certain words, the words will seem to be synonymous. Synonymous का मतलब है कि same meaning है words में, but that's where nuances come in, right? So nuances का मतलब होता है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड एक दूसरे के लिए डायरेक्टली रिप्लेसेबल नहीं होते. वेरी रेयरली विल फाइंड अ वर्ड. ओके, इफ यू आर रिप्लेसिंग मैमथ विद जायंट, विद बिग, विद ह्यूज, with massive, with enormous, then that is, these are 6 words, and all these 6 words can be used in different formats and should be used exclusively. If you see good authors, अच्छे authors जो होंगे, जो आपको usually you will find bestsellers, not necessarily, but then अच्छे authors definitely you will find in good newspapers का editorial column. अच्छे newspaper लीजिए, जैसे मैं business standard पढ़ता हूँ, business standard हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू हो गया. तो उनके एडिटोरियल में आप जाएंगे तो यू विल फाइंड द ऑथर्स यूज दिस वर्ड्स नॉट इंटरचेंजेबल. कभी भी enormous सक्सेस नहीं बोलेंगे, राइट? सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैं बस एक लाइन ऑफ थॉट बताऊंगा ताकि आपको नुआंसेस समझ में आ जाए, एंड देन यू गाइस आर नॉट कंफ्यूज्ड. ओके, सो enormous का मतलब होता है समथिंग दैट इज सो बिग एंड बैड. You can't say enormous success. You should not say enormous success. You should say enormous monster. That would be right. If if there is, if massive का मतलब होता है कि something that has mass. Okay, so need not be big. If it is tomorrow, it is discovered that some particle has a mass of 10 to the power minus 10 kgs, very less mass, that particle would still be massive. These are called nuances. All right, so I didn't want to talk about nuances, but since we had time, I thought that. So guys, it has been amazing talking about the passion that I have, that is discussing word roots. And what we'll do is I will actually be checking the comments later on. So you guys can, whatever I have asked you or whatever I have requested you, whatever we have discussed, आपको जो भी word अच्छा लगा, जो भी बीच में discuss किया हमने, वो please comment section में बताइए हमें. And happy learning to all. I am really thankful that Ask Vidyalaya, that is Anytime Anywhere School, India's first online school, has given me the opportunity to share the knowledge with you. I'm personally very thankful to them. So guys, again, a last request, please go and check out their Instagram page and the app that is free to download, like I mentioned.
check out the website and share with your friends. Thank you.